Hello students, let's discuss chapter 9 ray optics. Okay, so first of all we will discuss reflection. तो reflection में laws of reflection. First, angle of incidence and angle of reflection are always equal. Okay, second point, ray of incidence ray of reflection and normal drawn to surface of mirror at point of incidence are coplanar, same plane में है बराबर. And third, incident ray and reflected ray are always at opposite sides of normal. ठीक है, सपोज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बराबर. ये कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है. इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम बराबर. एंड यू कैन सी incident ray and reflected ray are always in opposite direction. ठीक है. Now we have to discuss spherical mirror. So there are two types of spherical mirror. First, concave mirror. Clear? So in case of concave mirror, this ये जो इनर साइड है ये रिफ्लेक्टिंग है बराबर. एंड कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है, जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है,
मेरा यहाँ पर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पर आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। Then we have to discuss some important definition about mirror, spherical mirror. Okay, so first is pole. So the center of the curved surface of the spherical mirror is called pole. Clear? तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका जो सेंटर होगा ये पोल है. देन सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो the center of the spherical surface from which the mirror is cut is called center of the curvature. मेरा ये मिरर सपोज ये वो स्फेरिकल सरफेस है जिसमें से ये मिरर कट किया है, तो उसका जो सेंटर होगा दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस. तो imaginary line passing through the pole and the center of the curvature is called principal axis. Okay, then principal focus. ठीक है, तो principal focus क्या है? Listen, if I consider ये axis है, the rays which are parallel to principal axis, the point where they meet after reflection is your principal focus. Okay, and in case of listen, in case of convex mirror, the point where it appears that parallel rays meet is called principal focus. बराबर.
the rays which are parallel to principal axis after reflection, the point where they meet in case of concave mirror and the point where it appears that they meet in case of convex mirror is called principal focus. ठीक है. Then focal length f, it is the distance between the pole and the distance between the pole and principal focus is called focal length. तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. ध्यान से देख लो, पॉज करके रीड कर लो. देन radius of curvature, so it is the distance between the pole and the center of curvature is called radius of curvature. Normally we denote radius of curvature by r. Then aperture of the mirror. मेरा तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसे अगर आप 90 डिग्री पर टिल्ट करोगे तो यू विल फाइंड सर्कुलर एज. तो उसका जो डायमीटर है, द diameter of the circular edge of the spherical mirror is called aperture. तो ये जो डायमीटर है मेरा, it is called aperture.
नाउ लेट्स डिस्कस साइन कन्वेंशन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज all distances must be measured from pole on principal axis. ठीक है. सेकेंड थिंग, distances measured in the direction of incident ray are positive and distances measured in opposite direction of incident ray are नेगेटिव. ठीक है, आपको पोल से डिस्टेंस स्टार्ट करना है, मेजर करना. और अगर डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है. तो अगर मैं पोल से इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए वो पॉजिटिव. और अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो वो नेगेटिव होगा. ठीक है. थर्ड, distances measured in upward direction from axis are positive and in downward direction are नेगेटिव. ठीक है, तो अगर आप एक्सिस से अपवर्ड मेजर करने जा रहे हो तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड लेंगे तो नेगेटिव. क्लियर. तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव. सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव. ओके, देन the relation between focal length and radius. तो f is r by 2 or r is equal to 2f. Clear. Then magnification, lateral magnification, and it is hi by ho, dimension of image upon dimension of object. ओके, इसकी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी, माइनस वी बाई यू, एफ के फॉर्म में एफ अपन एफ माइनस यू बराबर एंड एफ माइनस वी अपन एफ. ये आपको मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला याद रखनी. फॉर रियल इमेज magnification is negative and for virtual image
magnification is positive. Listen, in case of concave mirror, the position of the object is away from C. In that case, you will find image between F and C. So this is the ray diagram. Ray which is parallel to principal axis will pass through principal focus, and ray which passes through the principal focus after reflection, it becomes parallel to principal axis. Type of image real and inverted. Magnification is negative and magnitude of the magnification is less than 1. When the object is on C, you will find image on C. This is the ray diagram. Okay, image is real and inverted. Magnification, because it is real image, your magnification is negative, and the magnitude of the magnification is 1, because here object distance and image distances are equal. When the object is between F and C, okay, so you will find image away from C. Okay, again it is real image and so it is inverted. Magnification definitely negative because the image is real, but the magnitude of the magnification is greater than 1 because image distance is greater than object distance. There is only one case in case of concave mirror in which we get virtual image. Okay, when the object is between F and P, the image is behind the mirror. Okay, you can see these are the two reflected rays. When it seems that कि वो यहाँ से निकल रहा है, so if the AB is the object, A dash B dash is image, and it is virtual image because it is behind the mirror. Virtual image is always erect. Magnification is positive because the image is virtual, and you can see image is, the size of the image is greater than size of the object, so magnification, magnitude of the magnification is greater than 1. In case of convex mirror, for any position of the object, image is virtual, smaller than object. You can see for any position of the object. Okay, this is the ray which is parallel to axis. After reflection, it appears that it passed through principal focus, and this ray, it is perpendicular, so it will reflect on the same path. Okay, so this is the image, and you can see the size of the image is smaller than the size of the object, so magnitude is less than 1. Now let's discuss refraction. Okay, in this case, when light enters in another medium, if it is the oblique ray, it deviates from its original path. This phenomenon is called refraction. Okay, when light is incident at the interface of two media, some part of the light is reflected and some part is refracted. ठीक है बराबर. तो the part of light which enters in another medium, it is due to the phenomenon called refraction, and here we are discussing refraction. Okay, the first of all definition: when the oblique ray enters in another medium, it deviates from its original path. This phenomenon is called
Okay. So in case of refraction, light enters in another medium, and in case of reflection, it returns to the same medium. ठीक है? Then laws of refraction. So incident ray refracted ray and normal drawn to the interface of given two media are in the same plane. Okay. And second law, the ratio of angle of incidence and angle of refraction R is constant. रेशियो कांस्टेंट होता है. It is Snell's law. Here you can see theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of refraction. So sin theta 1 upon sin theta 2 is constant. Okay, this constant is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It is represented as n21 sin theta 1 upon sin theta 2. ये आपका रिजल्ट 1. Okay. The ratio of sine of angle, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, बराबर. ये आपका रेशियो है, साइन का जो रेशियो है कांस्टेंट है. हियर थीटा 1 is angle of incidence and theta 2 is angle of refraction. Now listen. The ratio of speed of light in vacuum and speed of the light in given medium is called absolute refractive index of the medium. ठीक है. तो for medium 1, so therefore n1 is C by V and n2 is C by V. So similarly, listen. Refractive index of medium 2
with respect to medium 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, n21 it is v1 by v2, ये रिजल्ट 2। now n21 which is v1 by v2, इसे मैं c से मल्टीप्लाई करता हूँ, c से डिवाइड करता हूँ, तो ये c by v2 c by v1। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में लिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया, n21 c by v2 n2 है और c by v1 n1 है, तो ये आपका रिजल्ट 3। now from result 1 and 3, अगर मैं 1 और 3 को इक्वेट करूँ बराबर, तो आई विल गेट n2 by n1 sin theta 1 by sin theta 2, so n2 sin theta 2 n1 sin theta 1, so it is n sin theta कांस्टेंट, n और sin थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी अगर रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 2 से मीडियम 3 में, मीडियम 3 से मीडियम 4 में जा रहा है, तो हर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एंगल, साइन वैल्यू ऑफ द एंगल, ये कांस्टेंट n इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है बराबर। n इंक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज होगा, n डिक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है, और n साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, पढ़ लो। ओके देन refractive index of the medium depends on type of material, refractive index of the medium depends on type of medium, type of material, then wavelength of the light and temperature, okay, then for given two media, medium with lesser refractive index is called rarer medium, and the medium with larger refractive index is called denser medium, ठीक है। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब दोनों मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग है, तो डेफिनेटली एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एक का ज़्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, बराबर। नाउ लिसन, सपोज n1 is less than n2, बराबर,
तो उस केस में आपको पता है साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो एंगल कम हुआ इस केस में। तो ये लेसन ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल है पर थीटा 1 है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये n2, n1 ज़्यादा है n2 कम है, यानी रेयर से टेंसर में जा रहा है, तो थीटा 2 कम हुआ, ये थीटा 2 है बराबर, यानी आपका जो ओरिजिनल पाथ था रे इस डायरेक्शन में डेविएट हुआ बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, thus when ray enters in denser medium from rarer medium, it deviates towards the normal। इसी तरह से suppose n1 is greater than n2, in that case sin theta 1 is less than sin theta 2, so theta 1 is less than theta 2, यानी theta 2 इंक्रीज हुआ बराबर। तो इस केस में ये इस तरह से होगा, बराबर, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो रे इस डायरेक्शन में डेविएट हुआ। अब n1 ज़्यादा है n2 कम है, यानी ये रेयर से डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो किस तरफ डेविएट हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। Thus when ray enters in rarer medium from denser medium, it deviates away from normal, ठीक है। इसी तरह से सपोज 3 media are in contact, तो उस केस में n31 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 with respect to refractive index of medium 1 is n3 by n1, तो इसे मैं n2 से डिवाइड करता हूँ और n2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया n32 इंटू n21 बराबर। पढ़ लो ध्यान से। Now lateral shift. What is lateral shift? So when light enters in a transparent slab, the direction of the emergent ray does not change, but it suffers linear shift. This shift is called lateral shift. You can see PQ is the incident ray. If the slab would not be there, then the path would be PQR dash S dash. Right? But due to this transparent slab, refraction occur at point Q, again at point R. Now this medium, we know that n sin theta constant, तो ये जो है ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ही है, तो ये एंगल थीटा 1 ही है, ये भी थीटा 1 ही था। तो जो रे इमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई पर उसका लीनियर शिफ्ट हुआ, ये लीनियर शिफ्ट जो है वो लेटरल शिफ्ट है। क्लियर?
तो definition: when the ray enters in transparent slab, the direction of the emergent ray does not change, but it suffers linear shift in the direction perpendicular to direction of propagation. This shift is lateral shift. ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका लेटरल शिफ्ट है। अब ये फिगर देखो, मीडियम 1 में एंगल थीटा 1, मीडियम 2 में एंगल थीटा 2। ये एंगल थीटा 1 होगा तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आपकी लेटरल शिफ्ट है। तो फॉर ट्राइंगल कौन सा, QMR, अब आपके पास एंगल है और आपको अपोजिट साइड फाइंड करनी है तो हम साइन लेंगे, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, अपोजिट साइड RM, और आपका हाइपोटेनस है QR। RM आपकी लेटरल शिफ्ट है, उसे आपको फाइंड करना है QR। सो वी हैव X इज इक्वल टू QR साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इससे आप रिजल्ट 1 कंसिडर कर लो। अब QR फाइंड करने के लिए आई विल कंसिडर ट्राइंगल QNR। तो फॉर ट्राइंगल QNR, अब इसके लिए cos थीटा 2 लो, तो एडजेसेंट साइड है QN, हाइपोटेनस QR, आपको QR ही फाइंड करना है। तो QN अपन cos थीटा 2 पर QN क्या है, थिकनेस, सो QR इज T अपन cos थीटा 2, ये आपका रिजल्ट 2। ये रिजल्ट वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो X इज T साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपन cos थीटा 2 बराबर। तो लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन कितनी लेटरल शिफ्ट होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द स्लैब N1 and N2 दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 1। पॉज करके पढ़ लो।